August 29, 2025, National Sports Day, a date forever etched in India's sporting memory, and now the beginning of a new chapter in the history of Uttar Pradesh. The very first batch of Major Dhyan Chand State Sports University Meerut, 59 young aspirants of the Bachelor of Physical Education and Sports stepped in as pioneers, as torchbearers of a dream. A 5-day on-field testing process was conducted for the selection of students for this first ever batch. Scientific tools and methodologies were used under the supervision of sports science experts to ensure only the most deserving and capable candidates were chosen. As the university campus is still under construction, its temporary office and classrooms are being run from the premises of Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Modipuram, Meerut. The dream of this university was laid by Prime Minister Narendra Modi, who placed its foundation stone on January 2, 2022. मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। Carrying forward this vision, Chief Minister Yogi Adityanath declared that Uttar Pradesh would strengthen sports like never before, and today this vision stands realized with the launch of the university's very first academic session. प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में प्रारंभ किया है और मेरठ में हमने पहला कुलपति भी अर्जुन अवार्डी जो रहे हैं उन्हीं को वहां पे इसका दायित्व दिया है। कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में हम एक स्पोर्ट्स कॉलेज तो कम से कम बना लें और उसको एफिलिएट करें, उसका एफिलिएशन हो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। From India's sporting legends to Bollywood icons, heartfelt wishes poured in blessing the university and its first students with hope and inspiration. Dear students, welcome to the Major Dhyan Chand Sports University
the first sports university of Uttar Pradesh. As the pioneering batch, you're stepping into history. Namaste. I would like to congratulate the first batch of Major Dhyan Chand State Sports University. You're the pioneers of a proud legacy in Indian sports education. Wishing you strength, discipline, and success as you rise to represent with pride. I congratulate the government of Uttar Pradesh, wherein they're coming up with a sports university in the name of Major Dhyan Chand ji. And I think it's a great initiative where education and sports go to be together under one roof. बहुत ही हर्षो उल्लास से एक बहुत बड़ी बधाई दे रही हूँ क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में पहली बहुत सुंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि एक खिलाड़ी के नाम समर्पित है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खुलने जा रही है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी छात्र हैं, वो मन लगाकर खेलें, मन लगाकर पढ़ाई करें। इससे बेहतरीन बात उत्तर प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। जो भी एथलीट अपने करियर को स्पोर्ट्स में आगे ले जाना चाहते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्या इनक्रेडिबल मोमेंट आई है कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में खुल रही है। स्पोर्ट्स हमको डिसिप्लिन सिखाता है, रिजिलियंस सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है। All my respects to the UP government for doing such a fantastic job of having a college which is dedicated to sports. Namaskar and greetings. What an incredible moment for sports in India as Major Dhyan Chand University, Uttar Pradesh's first sports university, opens its doors in the sports city Meerut. The young batch also took time to read and reflect on the inspiring life of Major Dhyan Chand himself, the man whose name this university proudly carries and whose spirit will guide them always. Vice Chancellor Major General Deep Ahlawat, VSM, an Arjun awardee and Asian Games medalist, encouraged the batch to pursue excellence with passion and discipline. On the occasion of National Sports Day and birthday of Major Dhyan Chand ji, I extend hearty welcome to the first batch of students of Major Dhyan Chand State Sports University. Each one of you is not just a student here, but a pioneer. You are laying foundation of a legacy which will inspire countless athletes in the years to come. Your journey here will be remembered as the first chapter in the history of the university. We are proud to have you with us in the campus, and we are committed to nurturing your dreams and helping you in achieving excellence, not only in the sports, but also in the life. I invite each of you to share your thoughts, aspirations, your dreams, so that together we can create a living record on this momentous occasion. Welcome to the history, welcome to the future of Indian sports. Jai Hind. Registrar Sunil Kumar Jha assured them of the university's unwavering support in this journey. It gives me the immense pride to welcome the first batch of students of Major Dhyan Chand State Sports University. You are not only students but the very foundation of this institution. As registrar, I assure that the university will provide all possible academic, sporting and administrative support to help you achieve excellence. Your discipline, dedication and hard work will set the
standards for generation to come. This is a historic beginning, and each of you is now part of the history. For these students, becoming part of the first batch was more than just admission. It was history calling, and they answered with pride. मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फर्स्ट बैच है मेजर ध्यानचंद स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में, काफी अच्छा लग रहा है। सर आज पहला दिन तो काफी अच्छा रहा, हमें बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली। यहाँ की मान्यता जो है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। काफ़ी एक्साइटमेंट है फर्स्ट बैच में आना नाम, और फिर आज से कॉलेज स्टार्ट होना, आज ही ध्यानचंद जी का जन्म। एक प्राउड फील हुआ है क्योंकि और फर्स्ट बैच है, पहली मेरिट लिस्ट में मेरा खुद का नाम आ गया। This induction was not just an event, it was a landmark, the first chapter of a legacy that will build champions, shape futures, and carry forward the name of Major Dhyan Chand.